two principles. Again, one of these two is not very fast. The variety principle. What is the variety principle? You need novelty, you need activity. I gave an example. One of the way of novelty, of variety is to create problems so that you can solve them. And I gave you the example of housewives, bored housewives. Okay, so वो मसला create करती हैं, furniture को दोबारा करती हैं, so that there is some novelty. Just on the sound by sexism, I am not just talking about females. Yes, I mean nibbling. Sometimes at night you're so bored, you can't stand that boredom. You go out, आप मूंगफली छील छील के खाना शुरू कर देते. A lot of nibbling, of course nibbling की और की explanation है, but one of it is कि यार मैं बोर हो रहा था, मैंने किसी छील के खाना शुरू कर दिया. ठीक? Just to kill the boredom, nibble food. बिजनेसमैन पे एक स्टडी की है मॉरस ने, जो कहता है कि जॉब में, अब कमिंग टू द जॉब, उसने कंपैरिजन किया इवनिंग हैबिट्स, इवनिंग डांसिंग हैबिट्स या एंटरटेनमेंट हैबिट्स ऑफ बिजनेसमैन एंड फैक्ट्री वर्कर्स. Said that because businessmen की जॉब इतनी स्टिमुलस, remember stimulus में our nervous system needs optimum amount of stimulation. Too less we are bored, too more we are stressed. It's like a radio. No, too low you can't even listen, too high and you say oh aista karo. Optimum amount of stimulation from the environment. सही है. So businessmen who had very enriching job, stimulating job, evening में, because their optimum level of stimulation has been reached, evening dancing habits was ballroom, lazy dancing, or sitting by the fireplace. Factory workers in the same study, whose job was non-stimulating, boring, repetitive, scientific management, evening में very creative in their dancing, folk very competitive, challenging each other and dancing restlessly to gain that sense of stimulation. ठीक है? That's why modern organization जो variety principle है, आगे हैक में older में भी cover होगा. Job needs to give you variety. ठीक है? Good job जो job loading की बात है, there is a variety principle there. ठीक है? Properly इसको हम cover करेंगे. Variety principle समझ आ गया? Creativity principle, these people have gone ahead and said कि because हमारा nervous system और core brain इतना evolve हो गया था, हमारा brain curious था, so सारी creativity भी इसी वजह से हुई है. All the science, the art, the poems, the literature, opera, symphony, mathematics, it has become forth because we had evolved an amazing forebrain, a curious forebrain, and we've created everything. So we have a desire to have novelty and variety, and we have a desire to be creative. If you are having any trouble understanding it, imagine Isaac Newton. The apple falling in on his head. I mean, he could just taken it up and eaten it if he was a specialist. But what started in his mind? Curiosity. All the creativity principle. मैंने एग्जाम्पल पिछली दफा दी थी, वैरायटी प्रिंसिपल, क्रिएटिविटी प्रिंसिपल. लुक एट अ ह्यूमन बेबी, लुक एट अ चिंपैंजी. आप ह्यूमन बेबी को 4 टॉयज दे, ठीक है? I have I told you this? Yes, sir. Same with chimpanzees doing that. फिर मैंने कहा था कि if आपकी स्टिमुलस स्ट्रगल, आपकी स्टिमुलस ड्राइव नहीं फुलफिल होती टू द ऑप्टिमम लेवल, you go back to the survival. You go back to the survival struggle. And you tempt your survival because it's thrilling, it's stimulating. And the first area, ये नीचे है पहले, you tempt survival by proxy. You don't actually tempt your own survival, but by proxy से मुराद है कि दूसरा. The psychological reason that you enjoy thrilling movies and thrilling novels is that you are looking at somebody struggling for survival, you can relate to them and you enjoy it. The last thrilling movie I saw was Valkyrie. I loved it, but I didn't love it that much because that is the problem of doing. I knew why I loved it. ठीक है? Then gossip, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके फिर उसको वॉच करना बड़ा अमेजिंग.
किसी और का सर्वाइवल टेम्प्ट so these are the things whereby you do it vicariously when you are watching a movie or thrilling novel or somebody else's survival in danger, you are vicariously tempting your survival vicariously from a distance. But some people go ahead and do it to themselves. Remember the irrational human being? People with boring. I met somebody and he said, I don't know if I told you, sir, मैं bungee jumping करता हूँ. I don't do it. You know how irrational? Because after death certificate, but people, why the thrill? This thrill of tempting your own survival, paratrooping, gliding, everything. This is tempting your own survival. So this we have a drive for novelty, for variety, for creativity, which is general, which is unlearned, which is hardwired in our nervous system, but it's not based in our physiology. बाय प्रॉक्सी का मतलब है वाइकेरियसली यूज. आपको खतरनाक नॉवल पढ़े तो जिसमें हीरो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो आप उससे रिलेट जब आप वाइकेरियसली कोई चीज करते हैं, यू रिलेट. हमारे साथ ऐसा कुछ देखा मूवी देखते हो कहते हैं यार ये ऐसा हीरो की जगह रिलेशन, इसको कहते हैं रिलेट करने का प्रोसेस. लगता है ना तुम फील द मूवी दे रहे, लग रहा होता है ना ये मैं मान ले. लोग भी कहते हैं यार आप शाहरुख खान की तरह लिखते हैं, कहते हैं ना. So what you do actually there is you are relating to that person. The reason many people are watching a movie, in their mind, you won't accept it, I know, but in your mind you are in that place, in the place of positivity, because you want to relate. Okay, I am going through this struggle. My survival is in there. So it stimulates your nerves. There's nothing wrong with that. But the tempting survival जो ऊपर लिखा हुआ है ना, sorry, इसका मतलब ये है कि you don't, you actually you go and you say मैंने बंजी जंपिंग करनी है, मैं जिंदगी से बोर हो गया. सही है. और by the way, there is a real risk of losing your life with survival. When you do, there is a real risk there, and they tell it to you. You know that. आपसे this sign of God. यदि अगर आप खुदा न खास्ता God forbid आप कुछ हो गया, हमारा कसूर नहीं. There is a real risk of losing your life. But it's adrenaline junkie because they enjoy it so much. So that's why I tell my students to find a job that is stimulating, so that you don't have to go ahead and do stuff like that. There's another general motive. There's a general drive जो कि लूटिंग से भी नहीं करता, but other morals and ordering and that is the status drive or the status motive. Status drive. It's not this drive. The status drive is not physiologically based, but again it's hardwired, evolutionary, innate. Status. I don't know what is status. How many of you have? And you quoted me exact same words. Relatives in a group. It's goal. Brilliant. आपका आंसर Anybody else? Status के बारे में misconception है. People think status means high status. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. Class is a form of status. You know, basically, let's get to the root of it. जी बेटा, question है? बहुत सारे status के बारे में. जी. Status के बारे में आपने पूछा था उसके. हाँ? Status के बारे में आप पूछे थे उसके लिए हाजिर है. जी बोलें.
स्टेटस बेसिकली आपकी पोजीशन होती है किसी एक सोशल ग्रुप में. Very good. Your position in a social group. To be precise, your social rank or your social position in a group. Sir, social recognition कह सकते हैं हम because it provides you a recognition. It gives you Yes. recognition. Yeah. It does give you recognition. So Yes. In a group, okay? In a society. Not society. Okay? Your status, your social ranking, okay? Your relative social position, your social rank in a group hierarchy, in a group ladder is your status, the pecking order. It can be in as small as a social group as a family, can be in a big, relatively big organization like a uni, and it can be society at large. एक लाइन में बोलने लगा हूँ, जरा लिखे ना. Any group of mammals no matter how cooperative, have a social hierarchy and social rankings ठीक है, लिख रहे हो? And a constant struggle for social dominance. एक सोशल हायरार्की होती है, एक लैडर होती है. उसमें आप हर एक का एक रैंक होता है और फिर एक स्ट्रगल होती है. पहले टू नो, जैसे ही सेड, टू नो व्हाट योर रैंक इज एंड देन टू मूव योर रैंक. Pecking order, if you look at जैसे a tribe of gorillas or baboons, okay, there is an alpha male social rank. उसके बाद उसका नेक्स्ट सबऑर्डिनेट, उसके बाद उससे कम, उसके बाद फीमेल्स, उसके बाद बेबीज. सो ये सोशल रैंकिंग सिस्टम है, सोशल हायरार्की. जो अर्ली हंटर गैदर थे, इवन विलेजेस में जो ट्राइब्स थे, ठीक है ना, हर एक का ट्राइबल चीफ्टन, उसका नेक्स्ट इन कमांड, उसके बाद दूसरे वीक पीपल, फिर खवातीन, फिर बेबीज. सोशल रैंकिंग सिस्टम. सो एवरी देयर इज अ हायरार्की, ठीक है. There is a rank for everyone and then there is a struggle. Problem ये हुई है जो ह्यूमन ने लिखी है कि we have moved from tribes to 6 बिलियन हो गए वायरसेस की तरह पूरी दुनिया में. ट्राइब में, ये सोशल हायरार्की में, ठीक है, ये बबून्स में, there is a nature of there is a personal, everybody knows everybody. There is a personal angle to it. जब हम सुपर ट्राइब बन गए, तो हम इम्पर्सनल हो गए, ठीक है, हम इम्पर्सनल हो गए. सो व्हाट हैपेंड, the unlearned need to have a hierarchy and then to have a social rank in that hierarchy was there, but the tribe was gone. What we did, we created pseudo tribes. One of the reasons people join bodybuilding club so that वहाँ पे वो सबको जानेंगे. एक social hierarchy होगी, एक अच्छा बॉडी बिल्डर है, उससे नीचे, उससे नीचे. कबूतरबाजी, even canary breeding clubs, okay, give us social hierarchy. Pseudo tribes क्या क्या होते हैं? You need a tribe when you know, almost know people, and then you have a social ranking match with them. जब भी दो लोग आपस में आते हैं ना, एक स्टेटस स्ट्रगल ऑन हो जाती है, ठीक है. अब एक और लाइन लिखें,
ये जो आपकी सोशल रैंकिंग है और ये जो आपकी सोशल स्ट्रगल है, डोमिनेंस स्ट्रगल, आपका जो स्टेटस है, ये स्टेटस कैसे डिस्प्ले होता है? और स्टेटस गुड, डोमिनेंस फ्लैग्स, स्टेटस फ्लैग्स और मोर अप्रोप्रिएटली स्टेटस सिंबल्स। सूडो ट्राइब्स, जल्दी जल्दी बोलूँगा। योर फ्रेंड्स एंड योर अक्वेंटेंसेस, इसको आप दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं? योर सोशल सर्कल। सो योर कार वर्सेस योर फ्रेंड्स कार, ओके? योर वॉच वर्सेस योर फ्रेंड्स और अक्वेंटेंस वॉच। एक सूडो ट्राइब है, उस सूडो ट्राइब ने आपको एक हायरार्की दे दी, उसमें आपको रैंक दे दिया और चांस दे दिया मूव होने के लिए। आर यू बॉयज एंड गर्ल्स विद मी? टू फास्ट नहीं जा रहा? एक और सूडो ट्राइब है, लोकल कम्युनिटी जहाँ आप रहते हैं, ठीक है ना? सो योर कार वर्सेस योर नेबर्स कार, योर वाइफ्स डायमंड नेकलेस वर्सेस योर नेबर्स वाइफ गोल्ड ब्रेसलेट। स्टेटस सिंबल्स होता है ना, ज्यादा होता है बल्कि आजकल, ठीक है? सो देयर इज अ कांस्टेंट स्टेटस स्ट्रगल गोइंग ऑन। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सूडो ट्राइब है जी, योर ऑक्यूपेशन, योर जॉब। सूडो ट्राइब है, ओके? यहाँ पे भी स्टेटस सिंबल्स होते हैं, यहाँ स्टेटस रैंक्स होते हैं और यहाँ स्टेटस डोमिनेंस फ्लैग्स का डिस्प्ले होता है, ठीक है? Walk around and watch. You come to my office, okay? You see my office. मैं मतलब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, okay? यार तेरी रिकॉर्डिंग की वजह से मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा बॉस के ऑफिस में जाए, फर्नीचर फर्क टॉप बॉस के कमरे में जाए, माहौल ही और, you know what I'm saying? So there is a status struggle आपकी जो जॉब है वो भी according to Morris एक सूडो ट्राइब है। हॉबीज and pastimes, bridge club, canary breeding club, bodybuilding club, coin collecting club. It gives you a social hierarchy where you have a social rank and a chance for social dominance. ठीक है जी? चूंकि मॉरिस वगैरह बेचारे अब मर गए हैं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैंने एक नया सूडो ट्राइब डिस्कवर किया। वेरी गुड। और एक स्टेटस स्ट्रगल है उसमें। लास्ट टाइम मैं सर कहाँ था, वेकेशन पे गया, ठीक है? तस्वीरें मैं किसके लिए लगाता हूँ? मैंने तो देख ली मैंने तो देखी है भाई, मैं किसी और क्यों लगा रहा हूँ? साल थाईलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया और लंदन गया। व्हाई आई डिस्प्लेड ऑल दोस पिक्चर्स? 2-3 दिन पहले आई वाज हैविंग डिनर समवेयर और पिछले अभी मेज पे किसी की सालगिरह हो गई। केक कटा, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट, वी एंजॉयड इट व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। बट केक कटा और अभी कुछ बातचीत हुई नहीं तो ठक 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 तस्वीरें खींचनी शुरू हो गई। Because the idea was not to enjoy the moment. The idea was कि इनको upload किया जाए, to show other people that we had an amazing birthday party. So बहुत सी चीज़ों से essence निकल गई। मैं ऑफ लेट नोट कर रहा हूँ कि इस FP में सूडो ट्राइब के अंदर सूडो ट्राइब्स पैदा हो रहे हैं। माफिया वॉर्स वाले अलग हैं, फार्म वेल वाले अलग हैं, और वो अपनी सोशल रैंकिंग है। And that's, you know, now you know it. You know what they're doing to you. Because if you can't, one important KLB, if you have status frustration है एक जगह, तो वो दूसरी जगह आप पूरी कर देंगे। जी। सर ब्रेक है यार बस मैं जस्ट खत्म करने लगा इस स्टेटस को, ताकि आप just give me just 5 more minutes. Don't क्वेश्चन है पूछे यार। देखो ये इतनी स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर ये जनरल ड्राइव, बिकॉज इट्स अनलर्न्ड। समटाइम्स you do something that is written dominance mimic. You don't have that status but you display it. You can afford a small car but you buy a big one.
You can afford a big car, you buy two. Okay? अगर आप एनिमल्स को देखें, if you look at insects, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर येलो और ब्लैक पैटर्न्स होते हैं, ये इनको कहते हैं वार्निंग क्लब्स, वैस्प्स होते हैं, डेंजरस, इनमें पॉइजन होता है। ये इनके ऊपर जो पैटर्न लगा होता है इसलिए लगा होता है कि दूसरी जानवर इन्हें खाए ना, पहले से ये इनका जो कलर पैटर्न होता है ना, ये इसको कहते हैं वार्निंग क्लब। इंटरेस्टिंगली एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने देखा कि कुछ आम मक्खियां हैं जिनमें जहर नहीं है, उन्होंने भी एवोल्यूशन में वो कलर पैटर्न डेवलप कर लिया। उनके अंदर जहर नहीं है पर बाहर से डिस्प्ले करनी है कि है। इट इज कॉल्ड डोमिनेंस मिमिक। जी नॉट कैमोफ्लेज, वार्निंग क्लब है कि जी हमारा जहर, ब्लैक और येलो पैटर्न्स होते हैं कि जहरीले वैस्प्स, ठीक है। सो कुछ है जिनमें जहर नहीं है लेकिन वो उनका कलर पैटर्न यही है, कोई नहीं उन्हें खाता। मेरी बात करने का ये थीसिस देने का मकसद पता है क्या? डोमिनेंस मिमिक। ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड डायमंड नेकलेस, बाय अ फेक वन और अ चाइनीज वन। I mean Louis Vuitton and you always have a Chinese DKNY, can't you? So, but लेकिन अब मसला क्या है? Well, let me wind up. So you do it because you have a strong drive. So you mimic it sometimes. Sometimes जो true status seeker होता है ना, वो इतना ज़्यादा mimic नहीं कर सकता, ठीक है? I mean, if you can't afford a new Corolla, you cardboard की Corolla तो तुम नहीं लगाओगे। You are a true status seeker. So you know अब problem इसमें क्या हुआ है, ठीक है? Problem ये हुआ है जो somebody said about villages and class system. अगर आपको स्टेटस फ्रस्ट्रेशन हो अपने सूडो ट्राइब्स में और आपकी स्टेटस ड्राइव फुलफिल ना हो रही हो तो आपको स्टेटस फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो स्टेटस फ्रस्ट्रेशन रीडायरेक्टेड अग्रेशन में निकलती है। रीडायरेक्टेड अग्रेशन क्या होती है? अब स्टेटस पे है, एक गुरीला है जो कि अल्फा मेल है, उसका सोशल रैंक है, उसका चैलेंजर आ गया है जो कि या तो बाहर से आया है या फिर उसी का बेटा है, ठीक है। अब एक स्टेटस टेंशन शुरू हो गई, एक स्टेटस वॉर शुरू हो गई है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, साइज अप कर रहे हैं, देयर इज वायलेंस, इमिनेंट वायलेंस, ठीक है ना, सोशल रैंकिंग के लिए। सडनली बिकॉज द टेंशन हैज रीच्ड समबडी और दोनों ने साइज अप कर लिया है, लड़ाई फिजिबल नहीं है। एक क्या करे, एक कोने में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, आई एम बीइंग क्रूअल बट इफ यू वॉच एनफ नेशनल ज्योग्राफिक यू रियलाइज दैट नेचर इज क्रूअल। छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, एकदम उनमें से एक ने उसको पकड़ा, उसको मार दिया, उससे क्या हुआ, एकदम टेंशन रिलीव हो गई है और वो वापस चला गया। वो जो कोने, वो है रीडायरेक्टेड अग्रेशन, वो स्टेटस फ्रस्ट्रेशन को निकाल के उस पे हार्मलेस चीज पे आप सुकून में आ गए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल ये रीडायरेक्टेड एग्रेशन और स्टेटस फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? जब तक क्लास सिस्टम था, रिजिड क्लास सिस्टम, ठीक है ना, तब तक हर एक को अपना स्टेशन पता था, जो कि गांव में आजकल भी होता है कि मैं चौधरी हुई हूँ, ठीक। आई मीन इंग्लैंड में अगर किंग हेनरी द 8th के लिए एक आदमी एक अच्छा घोड़ा एनी टाइम अपने लिए अपने couldn't have a good horse ready for the king, his wife was not allowed to wear velvet. उन्होंने लॉ बना दिया, अपनी अपनी जगह रहो भाई, ठीक है। वो ज़्यादा उसके बहुत बुरे चीज़ें भी हैं, बहुत नुकसान है, बट उसका फ़ायदा ये था हर एक को अपना स्टेशन पता था। अब गेम खुल गई, मेरिटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स। नाउ if you are not achieving the status that you want to achieve, you should achieve, you have a lot of status frustration and a lot of redirected aggression, okay? And वो कहाँ निकलेगी? If I have status frustration, I would take it out on my subordinates. It's the same little gorilla. Or I can come home, somebody can come home and beat their wife. Redirected aggression. Or children. Or the car's gearbox. Or if nothing else, your own self. You can always give yourself ulcers. You can always kill yourself. This is so strong status frustration that the people are driven to suicide.
प्राइमरी ड्राइव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगर थर्स्ट वगैरह, लेकिन लिटरेचर हमें ये बताता है डीप इंसाइट इनटू साइकोलॉजी के जनरल ड्राइव समटाइम्स टेक ओवर योर प्राइमरी ड्राइव एंड सेकेंडरी ड्राइव सब टेक ओवर योर प्राइमरी एंड जनरल ड्राइव्स. Before I close on this thing that how much you status frustration can affect you, there are some stats जिसके कई reasons हो सकते हैं, but एक reason ये भी है. There are more suicides in cities and urban centers as compared to villages, because in villages still people know their stations, and the status race is rat race is not that much as compared to in big cities. Number one. There are more suicides in males as compared to females, although females are catching up fast, but because males are more involved in status struggle. In the last 150 years, there were two sharp rises in suicides. They were in the times of economic depression. When there's depression, there's joblessness, job insecurity, status struggle में आप frustrate हैं, you kill yourself. Two sharp declines in suicides across Europe. ये दो कौन से times थे? Two world wars. Why kill yourself when you kill somebody else? Why take your aggression on yourself when you can take it out on somebody? इसकी एक और example दी है by the way. वो मुल्क जहाँ पे murder rate high है, legal system weak है, there is inhibition against killing each other or hitting women or children. ऐसे सारे मुल्कों में suicide rate high है. जहाँ murder rate कम है, वहाँ suicide rate high है. जहाँ murder rate ज़्यादा है, inhibitions नहीं है, वहाँ suicide rate कम है. By the way, we can go on and on, but this I think pretty much gives you an idea what status is. It's a general drive, one to many authors, and then now we're going to move towards secondary drives. Or we're going very slow. CRs, break.